Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल यहाँ स्क्रीन पर, a cylinder of diameter 1 centimeter at 30 degrees Celsius is to be slid into a hole in a steel plate. The hole is a diameter of 0.99970 centimeter at 30 degrees Celsius. To what temperature must the plate be heated? Let's understand this question by this diagram. A cylinder has diameter 1 centimeter, is to slid in a hole in the steel plate, and the diameter of this hole is 0.99970 centimeters. The diameter of the cylinder is little bit greater than the diameter of the hole in the steel plate. Both are at initial temperature 30 degrees Celsius. What we want to find, to what temperature must the plate be heated? हमें किस टेम्परेचर तक इस प्लेट को हीट अप करना होगा. यानी यहाँ इस क्वेश्चन में जो हीटिंग है वो सिलेंडर और प्लेट दोनों की नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें प्लेट को हीट अप करना है. जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखा था आज की वीडियो में, उसमें हमें आयरन बॉल को भी हीट अप करना पड़ रहा था और साथ में ब्रास प्लेट को भी. यहाँ हीटिंग सिर्फ स्टील प्लेट के लिए, तो जो भी यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो स्टील प्लेट के लिए होंगी. क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में ये बात नज़र आ रही होगी कि इनिशियली इस होल का जो डायमीटर है इट इज़ 0.99970 सेंटीमीटर. अगर हम इसे हीटअप करना चाहेंगे इस सिलेंडर को इसमें से पास करवाने के लिए, तो हमने पहले भी कहा था कि इस पासिंग के लिए जो मिनिमम कंडीशन है दोनों के डायमीटर इक्वल हो. यानी इस स्टील प्लेट को इतना हीटअप किया जाए कि ये जो डायमीटर है ये बढ़ के इसके इक्वल हो जाए. यानी अगर ये इनिशियल डायमीटर है तो जो फाइनल डायमीटर रिक्वायर्ड होगा इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. लेट्स मेक डेटा नाउ. Initial diameter of the hole in the steel plate is 0.99970 centimeter. The final diameter that is required is 1.00 centimeter. The initial temperature of the steel plate is 30 degrees Celsius, and the coefficient of linear thermal expansion for the steel is given here in the question, 1.1 exponential minus 5 per degree Celsius. We want to find the final temperature. We have learned in the theory of thermal expansion the final length or diameter of circle or length of the rod is given by L2. Final length is equal to L1 into 1 plus alpha delta T. इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन वाला पार्ट दोबारा लेंगे. Let's first calculate the change in diameter, that is L2 minus L1. Let's substitute the values of L2 is 1.00 minus 0.99970. The difference, that is the increase in diameter of this sphere which is required, is 3 exponential minus 4 centimeter. इसे हम जरा साइड लाइन कर लेते हैं. We know that the change in length or change in diameter will be equal to L1 alpha delta T. Let's arrange for delta T. Delta L over L1 alpha delta L. 3 exponential minus 4 L1 is 0.99970 into the value of alpha is 1.1 exponential minus 5. On solving this ratio, the change in temperature is 27.28 degrees Celsius. Now, delta T can be replaced by T2 minus T1. 27.28 T2, T1 is 30, 27.28. So T2 will be equal to 30 plus 27.28. So finally the temperature जिस पर हमें स्टील प्लेट को ले जाना है, it is 57.28 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट्स, समर एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स थे ये.
आज हमने इस वीडियो में इनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 11 के कुछ और टिपिकल न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग एक्सीलेंस ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।